हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। चलते स्टार्ट करवा आज आ गोटे नुआ सेशन को। आमर फास्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। शिशु केन्द्रिक शिक्षार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य केउंटी? टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, रोट मेमोराइजेशन ना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। आमर सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ learners. परवर्ती क्वेश्चन, according to Piaget, children in the age group of 7 to 11 years are generally in which stage of cognitive development? पियाजे अनुसार 7 ରୁ 11 वर्ष बयसर पिला माने साधारणतः ज्ञानात्मक विषय केउं पर्यायर थांती? हमर ऑप्शन गुडी होची सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आमर एठी राइट आंसर टी हो ऑप्शन सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आमर परवर्ती क्वेश्चन होची द कांसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD वाज गिवन बाय हुम? जीन पियाजेट, ले वाइगोट्स्की, जॉन ड्यू ना BF स्किनर। आमर राइट आंसर हो ऑप्शन बी, लेव वाइगोट्स्की। परवर्ती क्वेश्चन टी होची लर्निंग बाय डूइंग इज मेनली एसोसिएटेड विथ हुम? कार्य करी शिखिबा मुख्यतः क्या सहित संपर्कित? जॉन ड्यूए, BF स्किनर, कार्ल रजर्स, थॉर्नडाइक। क्या सहित ना ऑप्शन ए, राइट आंसर हो ऑप्शन ए, जॉन ड्यूए। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? ऑप्शन गुडी अच्छी समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट ना एंट्रांस असेसमेंट। आमर राइट आंसर हो ऑप्शन बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 होची अकॉर्डिंग टू कार्ल रजर्स लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज कौन ना कार्ल रजर्स को अनुसार शिक्षण सबुठारु प्रभावशाली हुए जेतेबेले यह कौन ना टीचर सेंटर्ड एंड कंट्रोल थाए ना स्टूडेंट सेंटर्ड एंड सेल्फ इनिशिएटेड ना बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन ना बेस्ड ऑन पनिशमेंट। हमारा सठिक उत्तर हो कौन ना ऑप्शन बी, स्टूडेंट सेंटर्ड एंड सेल्फ इनिशिएटेड। परवर्ती क्वेश्चन, इन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट इज यूज्ड टू? स्किनर को ऑपरेंट कंडीशनिंग रे रीइंफोर्समेंट कहीं व्यवहार करा जाए? हमर ऑप्शन गुडी अछि डिक्रीज बिहेवियर, इंक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर, स्टॉप लर्निंग ना क्रिएट फियर। आमर एठी सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी, इंक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? ऑप्शन गुडी कोन देछि गिविंग ए स्टूडेंट प्राइज फॉर गुड परफॉर्मेंस, removing an unpleasant task when the student performs well, punishing a student for poor performance ना giving extra homework for poor performance। आमर राइट आंसर टी हो ऑप्शन ए, गिविंग ए स्टूडेंट ए प्राइज फॉर गुड परफॉर्मेंस। परवर्ती क्वेश्चन, व्हाट डज रजर्स कंसीडर एसेंशियल फॉर ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट? रजर्स को मतरे एक सकारात्मक शिक्षण परिवेश पाई कौन आवश्यक? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट ना कंपटीशन एमंग लर्नर्स ना एम्पैथी एंड एक्सेप्टेंस ना रोट मेमोराइजेशन। आमर एठी राइट आंसर टी हो ऑप्शन सी, एम्पैथी एंड एक्सेप्टेंस। परवर्ती क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स कौन? समावेशी शिक्षार अर्थ कौन? टीचिंग ओनली हाई अचीविंग स्टूडेंट्स ना एजुकेटिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटीज ना सेपरेटिंग चिल्ड्रेन विथ डिसएबिलिटीज ना टीचिंग स्टूडेंट्स सेपरेटली अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। आमर एठी राइट आंसर टी हो ऑप्शन बी, एजुकेटिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटीज। आमर 11 नंबर क्वेश्चन टी होची व्हिच थियोरी एक्सप्लेन्स लर्निंग थ्रू स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स? उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया माध्यम शिक्षण को क्यों तत्व व्याख्या करे? कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म एंड
कॉग्निटिविज्म आम राइट आंसर हो ऑप्शन बी बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन होची थॉर्नडाइक्स थियोरी ऑफ लर्निंग इज नोन एज थॉर्नडाइक शिक्षण तत्व क्यों नाम परिचित? इनसाइट थियोरी, ट्रायल एंड एरर थियोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी ना सोशल लर्निंग थियोरी? आम राइट आंसर हो ऑप्शन बी ट्रायल एंड एरर थियोरी। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स? केउंटी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल? रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग ना एनालिसिस ना रिकॉलिंग? आमर ये राइट आंसर हो ऑप्शन सी एनालिसिस। परवर्ती क्वेश्चन ए गुड टीचर शुड प्राइमरीली एक्ट एज जने भल शिक्षक मुख्यतः कहा भूमिका ग्रहण करने उचित? डिक्टेटर, फैसिलिटेटर, कंट्रोलर ना एग्जामिनर? आम राइट आंसर हो ऑप्शन बी फैसिलिटेटर। परवर्ती क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स मीन दैट? शिक्षार्थी मानक मध्यरे इंडिविजुअल डिफरेंसेस रो अर्थ कौन? ऑल लर्नर्स हैव द सेम एबिलिटीज, लर्नर्स डिफर इन एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल्स, ओनली इंटेलिजेंट लर्नर्स कैन लर्न ना लर्निंग स्टाइल्स आर द सेम फॉर एवरीवन? हमर ऑप्शन आम राइट आंसर टी कौन हो ना ऑप्शन बी लर्नर्स डिफर इन एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल्स। परवर्ती क्वेश्चन मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विदिन द लर्नर्स कॉल्ड? शिक्षार्थी भितर आसुवा प्रेरणा को कौन कह जाए? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ना सोशल मोटिवेशन ना एक्सटर्नल मोटिवेशन? आमर ये ऑप्शन सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्किनर एम्फासाइज्ड द रोल ऑफ? स्किनर कहार भूमिका उपर गुरुत्व देइथिले? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, अनकॉन्शियस माइंड, इंटेलिजेंस ना इमोशंस ओनली? कहा उपर देइथिले ना हमर राइट आंसर हो ऑप्शन ए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए की बैरियर टू इनक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षार एक प्रमुख बाधा कौन? अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स ना एक्टिव पार्टिसिपेशन ना इक्वल अपॉर्चुनिटी? हम राइट आंसर हो ऑप्शन बी लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन प्रोमोट्स कौन ना समावेशी शिक्षार नीति कौन प्रोत्साहित करे? कंपटीशन एंड एक्सक्लूजन ना इक्विटी एंड पार्टिसिपेशन ना सेपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ना डॉट लर्निंग? हमर सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी इक्विटी एंड पार्टिसिपेशन। हमर 20 नंबर क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग? के निम्नलिखित मध्यरु केउंटी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रो वैशिष्ट्य नुहे? ऑप्शन गुटे कौन देछि लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर ना टीचर हैज ए डोमिनेंट रोल इन द होल प्रोसेस? हमर सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी टीचर हैज ए डोमिनेंट रोल इन द होल प्रोसेस? ऑप्शन डी हमर सठिक उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन रिमेडियल टीचिंग इज मेनली यूज फॉर? रिमेडियल टीचिंग मुख्यतः कहीं व्यवहार करा जाए? आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज एंड हेल्पिंग लर्नर्स ओवरकम देम ना गिविंग पनिशमेंट टू वीक लर्नर्स ना इंक्रीजिंग कंपटीशन ना कंडक्टिंग फाइनल एग्जामिनेशन? हमर सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज एंड हेल्पिंग लर्नर्स ओवरकम देम। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच अप्रोच emphasizes that learners construct their own knowledge? शिक्षार्थी माने निजे निजर ज्ञान गठन करती बोली क्यों अप्रोच गुरुत्व दिए?
बिहेवियरिस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ना ट्रेडिशनल अप्रोच, ना टीचर सेंटर्ड अप्रोच। आमर एठी राइट आंसर टी हो ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स और एकेडमिक टर्म। एक पाठ्यक्रम किंबा शिक्षा वर्षर शेष में क्यों मूल्यांकन करा जाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, सुमेटिव असेसमेंट ना कंटिन्यूअस असेसमेंट। आमर सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी सुमेटिव असेसमेंट। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फाइनल एग्जामिनेशन ना बोर्ड एग्जामिनेशन ना मिड चैप्टर क्विज ना एनुअल एग्जामिनेशन। आमर सठिक उत्तरटी हो ऑप्शन सी मिड चैप्टर क्विज। परवर्ती क्वेश्चन टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ। टीचिंग को सर्वोत्तम भाव में क्यों प्रक्रिया भाव में परिभाषित करा जाए। वन वे कम्युनिकेशन ना पर्पजफुल टीचर लर्नर इंटरैक्शन ना मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स ना गिविंग इंस्ट्रक्शन ओनली। कौटी आमर सठिक उत्तरटी हो ऑप्शन बी पर्पजफुल टीचर लर्नर इंटरैक्शन। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग एज ए प्रोसेस। ऑप्शन गुड कौन देछि लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड by experience, learning involves active participation ना learning is not related to maturation। आमर सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन डी learning is not related to maturation। थैंक यू फॉर वाचिंग।